Good morning, Pankaj. Good morning. Okay, so we have nine students are there, and let's slowly start that content of the today's lecture. So in the last lecture, last laboratory, what we have done, we have done the process of installation, and we have learned the architecture of the 8085, and we have get the summary of that how actually 8085 architecture is going to be work. Okay, as well as I have give you the basic idea on that, how the assembly language program can be written and what are the process for that. So this type of the things we have already discussed in the last lecture, last laboratory. Okay, so in this second experiment, like in the last or previous lab, somebody I think from this lab, or I have forgot that somebody has asked me, like how we can get able to do the program in assembly, because they don't know about that any kind of the syntax or any type of the code or any practices there. So for that, what we are going to do from the this experiment number two, whatever the task that we are going to perform, first we will go through their basic fundamental of the different instruction set. Like to do this task, if it is required 15 or 16 instructions, so first we will learn that what is the instruction, what is the meaning of that, how you can use that, okay, what are the contents going to be changed in your 8085 architecture, and how those instructions can work. And then you need to relate, like now I want to do this exercise, so how I can perform with this set of the instructions. Okay, so likewise the practice that we are going to do whenever there are a new instruction is going to be there, so first the new instruction we will going to learn, then the program is going to be executed. Okay, so in this laboratory, first I'm going to explain some of the basic assembly language syntax, and once we will go through that syntax, and then if time permits, if up to 10 if 10 o'clock if this going to be done, then we will start with the program. Otherwise we will first understand the basic fundamental instruction that
actually most of the time we are using in a 8085 programming. Okay. Before going to the software base, I want to give you the little bit glimpses on the hardware. Like this is a software work we are doing, okay? But how actually this instruction is going to be loaded in a hardware, okay? So for that, there are a hardware which is named as a Dyna 85 hardware kit is there, okay? So such type of the box and such type of the hardware is already available in laboratory, but right now this time is not permitting us to just do this hardware demonstration. That's why we are going with the online. But if time permits and if class will be started offline, then we will go with this demonstration of this hardware kit also. But the basic fundamental that I want to give you with that, what is this hardware and what are the different chips that you are actually seeing. So we can say basically your 8085 microprocessor chip is situated over here. Okay, so this is your microprocessor chip over here, which is 8085. After that, there are the another supportive chip, which is IO interface. So IO interface, it means input output interface. Okay, so there are IO interface drives are there. There are keyboard display IC is there, through which that keyboard instruction can be decoded and fed into the IC. So for the keyboard or display interface, another IC is there. Here there is a 7-segment LED display is there to identify their memory location and the instruction that you are loading. As well as there is a counter and timer, like in program counter and stack pointer, we require some counting sequence. So for that, there are a counter and timer is there. Power supply is going to be there. Then after in the down, we are having a EPROM, like memory storage are there. So EPROM is there, as well as static RAM is going to be there. Battery backup is going to be there. As well as there are a hex keypad is also there for entering the assembly language program. Okay. And if you want to expand your memory, so there are a extra socket is also for the extension of the expansion of the EPROM. Okay, so how this kit going to be work? Okay, let me first give you the brief on that. Like in a last lecture we have done the program which will be like this one, look like this one. So there are some instruction are there like MVI A with some hex number, then move A to B, then so adding the two number, such type of the instruction, assembly language instructions we have written. As well as I have shown you that in the memory, in the address location, okay, in the address location there are some hex code is going to be updated with that hex or decimal, converted of the hex to decimal. That number is going to be displayed on the right hand side of your screen. Okay, so over here what is going to be happen, like to execute it with this Dyna 85 kit, what you need to do, okay, how the code is going to be loaded. So first you need to write whatever the instruction that you want to execute. okay, अगर आपने ऐसा डिसाइड किया कि मुझे दो नंबर को ऐड करना है, ओके, और वो दोनों नंबर बी और सी में है, और ये दो नंबर को ऐड करके उसका जो रिजल्ट है मुझे अगर डी में लोड करना है, so whatever the instruction are there, first you need to write on paper that this is the first instruction, this is a possible second instruction. Likewise, you need to write all the instruction in the paper. Then you need to identify the equivalent hex code of that instruction. Okay, इसका मतलब क्या हुआ, MVI A44H के लिए आपको दो हेक्स कोड मिलेंगे. फर्स्ट हेक्स कोड किसके लिए, MVI A के लिए, और सेकंड हेक्स कोड किसके लिए, जो यहाँ पे डेटा लोड कर रहे हैं उसके लिए. So MVI A which is having a hex code 30E, 3E and 44 which is the data actually loaded. As well as move B to A, उसके लिए hex code क्या है 47 and then reset or we can say hold. For that it's a CF is going to be good. तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे एक पेपर में सब इंस्ट्रक्शन लिखो, उसके बाद में हर एक इंस्ट्रक्शन के लाइक पूरा एक टेबल रहता है, ठीक है, वो टेबल में ये हर एक MVI A MVI B सब के लिए पूरे इंस्ट्रक्शन के पूरे सेट रहते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन के लिए क्या हेक्स कोड है ऐसा पूरा टेबल होता है. तो आपको टेबल में से ढूंढ ढूंढ के पता करना है भाई MVI A मतलब क्या हेक्स कोड हुआ, मूव B to A मतलब क्या हेक्स कोड हुआ. तो ऐसे आपको हर एक इंस्ट्रक्शन वाइज यू नीड टू राइट दी hex code of all of them, and then this hex code you need to start load in through this particular keypad. यहाँ पे सेट बटन प्रेस करने के बाद फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे आपको कौन सा, यहाँ पे C 4 times 0 है तो आपको 3E एंटर करना है. So first you need to set to C000, then 3E,
then 44, then 47 CF. So likewise आपको वो जितने भी हेक्स कोड का पूरा सीक्वेंस है वो पूरे ऑर्डर में आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, and then after your entire program is loaded in your 8085 architecture, and then it is work according to the program you have done. Okay, so ऐसा प्रोसेस करना पड़ता था, लाइक हर एक के लिए कोड फाइंड आउट करो और उसके लिए एंट्री करो मैन्युअली, and then it's going to be executed. While in a virtual program, in a virtual kit, what we have, we directly need to write the assembly language program only. Okay, so that assembly language program that you need to write, और आपको सिर्फ देखना है कि जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है whether that program is reflected in the register or not, उसका कंटेंट ऐड हुआ या नहीं हुआ, वो एडिटिंग एक्सचेंज जो भी कर रहे हैं, whether it is going to be done directly, we can see in our virtual 8085 simulator. So hardware, whatever the background task in the hardware which is done by the सॉफ्टवेयर इन आवर ऑनलाइन सिमुलेटर, और हमको वहां पे एक एक हेक्स कोड फीड नहीं करना पड़ता है, हमको डायरेक्टली अपना असेंबली लैंग्वेज कोड ही लिखना पड़ता है जैसे हम दूसरे C++ कोड लिखते हैं. ओके, सो दिस इज जस्ट काइंड ऑफ द कंपैरेटिव स्टफ between this Dynakit and this is a online 8085 simulation software. Okay, so in experiment number 2, एक्सपेरिमेंट 2 आप जब तक हमें कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट लैब में आप खत्म करने के बाद आप कैनवास में भी अपलोड कर सकते हो. अभी तक हमने वहां पे अपलोड नहीं किया, बट इट्स अपलोडेड सून. ओके, सो अंडर द एक्सपेरिमेंट नंबर 2 we need to do actually the basic fundamental 5 tasks. Okay, ये छोटे छोटे टास्क है, इतने ज्यादा बड़े बड़े भी नहीं है. आप you can do the simple type of the assembly language programming for that. So what are these 5 tasks we have? Whenever you have doubt, whenever you have query, please guys just interrupt me in between and then tell me to repeat it again. Okay? Okay, चलिए. Yeah. So कौन से 5 टास्क हमको करने हैं? Which are the tasks we have? Like first, we need to write an assembly language program to write a data into 41H into register C, and we need to copy it to the accumulator. So simply आपको register C में 41H को लोड करना है और बाद में वो डेटा को आपको accumulator में कॉपी करना है. So there is a 2 to 3 line code we have, but there is just for that how the data transfer instruction going to be happen. Okay, second small program, load register H with 34 and register L with the ABH. So ये भी सिंपल चीज है, हमारे पास H को 34 से लोड कीजिए, L को ABH से लोड कीजिए. So we require another 3 to 4 line of the program for that. Another, like third program, which is little bit larger, like copy. We need to copy 30H in all the register. So we have accumulator B, C, D, E, H, L. So what we need to do in all the register, we need to copy a 32H number. Okay. So move instruction is going to be used very well over here. Then fourth program we have, which is a load accumulator with content of memory whose address is 2500H using 3 different techniques. इससे ये प्रोग्राम का मतलब क्या है कि आपके पास एक एड्रेस है 2500H करके. So under this address of 2500H, you need to take the data from that location and you need to load that data into the accumulator. Okay, 2500H मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा पड़ा हुआ है वहां से लेके आपको एक्यूमुलेटर में उसको कॉपी करना है. ठीक है, और ये चीज आपको कैसे करनी है? बाय यूजिंग द 3 डिफरेंट टेक्निक. आपको 3 अलग अलग टाइप के प्रोग्राम बनाने हैं जिससे ये सेम टास्क एग्जीक्यूट हो. ओके, फिफ्थ वन, which is exchange the content of memory location of 2000H and 2500H using direct addressing and indirect addressing. तो मतलब क्या हुआ कि 2000 and 2500H ये दोनों जगह पे कुछ डेटा है, आपको क्या करना है? वो डेटा को एक्सचेंज करना है. यू नीड टू एक्सचेंज दैट डेटा, ओके, फॉर दैट मेमोरी लोकेशन, ओके, यूजिंग 2 मेथड, डायरेक्ट एड्रेसिंग,
इनडायरेक्ट. सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होता है वो प्रोग्राम करने के बाद हम सीखेंगे. बट initial three tasks which is very common and very small, but the little bit of complexity going to be added in task number 4 and task number 5. ठीक है. तो अभी ये सब प्रोग्राम तो किया, लेकिन कैसे करेंगे, कौन से इंस्ट्रक्शन चाहिए, वी डोंट नो एनीथिंग राइट नाउ. कंसीडर लाइक दैट. Then we need to start with the basic stuff, that which are the possible or which type of the possible instruction that can be used over here. Okay. So now let's start with the first instruction, which is name is move rdrs. Okay. So move rdrs, this is a instruction to copy the content of the source register into the destination register. मतलब कि इससे आपको क्या पता चलता है कि जो सोर्स रजिस्टर आरएस में जो डेटा है उसका एक और कॉपी दूसरी जगह पे लोड होता है. कहां पे, आरडी में. So this instruction will give the stuff like जो भी आपका RS का डेटा है वो RD में भी कॉपी होगा. Now it's not move, it means वैसा नहीं कि भाई RS में से डेटा निकल के RD में चला गया, नहीं. It create a copy. जो भी RS में डेटा था उसका एक और कॉपी वो बनाता है. कहां पे, RD में. So this is kind of the move RDRS. जहां पे आपको डेटा चाहिए that register you need to write as a first RD, और जहां से चाहिए, okay, from which register you require, that is right as a second is a RS. So move RDRS. Okay. This is a simple register transfer type of the function we have. Second instruction we have MVI RD data. Okay. So this is a 8-bit data stored in a destination register or memory. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई रजिस्टर में से नहीं, बट डायरेक्टली कोई रजिस्टर को आपको असाइन करना है कि भाई तुम्हारा वैल्यू ये हेक्सा नंबर है, लाइक दिस, लाइक रजिस्टर सी having a value of 33H. If you want to directly assign some hex number to any register at that time, MVI RD data is going to be used over there. So we can say there is a direct data assignment, we can say. Okay, so this is instruction will store the 8-bit data into the destination register, or we can say in memory. Third instruction we have, which is a LDA 2034H. Okay, जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन ये देखते जाएंगे, आपको जो 5 टास्क है उसमें अलग अलग आपको प्रोग्राम करना है, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, ये प्रोग्राम यूज कर सकते हैं. सो लाइकवाइज यू कैन गेट द ग्लिम्पसेस ऑफ दैट. Third instruction we have LDA 2034H. So that 2034H is a 16-bit addresses. So what is the meaning of this LDA? The content of memory location. Just a second, guys. Just a 2 minute, guys. Just a 2 minute.
Yes, sorry for the interruption. I think there are some. Okay, so some of the students are writing the instruction also, like 34, ABH, and all the things. Okay, okay, done. So in the third instruction, LDA 2034H, the content of the memory location specified by the 60-bit address in the operand are copied into the accumulator. So meaning of that, whatever the data pointed or whatever the data available at this memory location, okay, like 2034 पे जो भी data वहां पे है, by writing this instruction वो data वहां से accumulator में as a shift हो जाएगा, or we can say that accumulator will create the copy of the same data available in 2034H. Okay, so LDA load accumulator, you can say like that. So load accumulator, whatever the memory location वहां से data, it's come and create a copy of the same data into the accumulator. Now ये accumulator को load करने की बात हुई. Another stuff like that, then how we can load the other register like B, C, D, E, H, A, H, L, like that. So for that, instruction will be LDAXB, like that. So it's creating in the register pair. So what is the meaning of this one? Like the content of the designated register pair point on the memory location. Instruction will copies the content of that memory location into the accumulator. The content of the either register pair or the memory location is not going to be altered. Okay, what is the meaning of that? Like if you have written LDAXB, okay, so LDAXB, it means आपने B में अगर आपने, let's take, you have, just let me write, B में यहाँ पे आपने 20 लिखा है, C में आपने 50 लिखा है. Okay, so by doing that LDAXB, what this particular stuff is going to be do, the content of the designated register pair point to the memory location. So what is the memory location it will point? It will point the memory location of 2050H. Why? Because it is a pair of BC. Okay. Instruction copies the content of that memory location into the accumulator. तो ये जो 2050H जो BC ने point out किया है, वो data जो 2050 पे अभी है, now it is start jumping and it's going to be load in the accumulator. मतलब के BC में जो अभी डेटा है वो डेटा को एज अ कंबाइंड मेमोरी एड्रेस की तरह कंसीडर करके आप वो लोकेशन पे जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में लेके आ सकते हो. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी थ्रू लोड थ्रू द स्पेसिफिक रजिस्टर पेयर. ओके, नाउ what we can say in another stuff like LXIH. Okay, LXIH 2034H. So what LXIH 2034H will do? Like this instruction loads a 16-bit data in the register pair. Simply when you are writing LXIH, so 20 and 34, so 20 going to be stored in a H, 34 going to be stored in a L. So likewise, the instruction load a 16-bit data in the register pair. So simply, whatever this 2034 is there, it's going to be loaded 20 in H, 34 in L. So there are 16-bit data going to be loaded directly using HL pair. क्योंकि आपके पास तो H का 8 ही पेयर है, L का 8 बीट का है, बट आपको 16 बीट का डेटा लोड करना है तो by writing this instruction, it going to be stored 88 bit in H and L. Now LHLD, sixth instruction is going to be LHLD. अभी 6 तक हमने जो इंस्ट्रक्शन देखी ना, इसके रिवर्स. ओके, हमने एड्रेस से डेटा लिया था, अभी उस एड्रेस पे डेटा भेजने के लिए अभी उसकी ऑपोजिट इंस्ट्रक्शन आएगी. बट दिस इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन अबाउट द LHLD 2040H. इसका मतलब क्या हुआ? LHLD, द इंस्ट्रक्शन कॉपीज the content of the memory location point out by a 16-bit address into L and the next memory location into the register H. LHLD का मीनिंग ऐसा हुआ कि आपके पास LHLD के बाद आपने 2040H लिखा है, तो 2040H के ऊपर जो भी डेटा है वो डेटा कहां पे आ जाएगा? और दैट डेटा इज गेटिंग कॉपी इनटू द L. तो वहां पे जो डेटा है उसका एक कॉपी L में मिल जाएगा, और जस्ट आफ्टर द मेमोरी एक नेक्स्ट लोकेशन 2041,
So 2041 का जो डेटा है, it again going to came into the H. So by simply writing LHLD, 2040 का डेटा L में आ जाएगा, 2041 का डेटा H में आ जाएगा. Simply directly from the register, your data going to load into the L and H. Okay. Next we have STA 2500H. So हमने यहाँ पे लोड LDA देखा था, लोड एक्यूमुलेटर. तो ये जो लोकेशन के ऊपर जो डेटा है उसका कॉपी एक्यूमुलेटर में बन जाए. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस LDA. सिमिलरली इन STA 2500 इसका मीनिंग क्या हुआ? Whatever the memory location pointed out here, वो जगह पे एक्यूमुलेटर का डेटा वहां पे कॉपी हो जाए. So the copy of the accumulator has been created on the memory location of 2500H. Okay. Now there is a second STAXB. तो LDAXB में क्या था हमारे पास? जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया था, B equal to 20, C equal to 50. So 2050 पे जो डेटा है वो कॉपी हो जाए. वो सेम डेटा कहां पे मिलेगा हमको? एक्यूमुलेटर में. Now it is going to be reverse in STAXB. सिमिलरली अगर ये हमारे पास यहाँ पे 20 B में है, 30 C में है, सो पॉइंटेड आउट 20 30 H. तो ये लोकेशन पे अभी कौन सा डेटा चला जाएगा जो एक्यूमुलेटर में है वो. ओके. सो STA stands for store, LD stands for load. Okay. So that's kind of the opposite task as a LDAXB. So that is going to be done in a STX. SHLD, which is the opposite of this LHLD. What SHLD will do? SHLD will do that whatever the number is written over here, 2550. Okay. So 2550 पे by writing this SHLD 2550 में data है whatever the content of L, register L का जो content है वो 2550 में चला जाएगा. And by increment of 1, 2551 H का डेटा है वो मेमोरी लोकेशन पे चला जाए. So if you want to load two memory locations simultaneously, so just by writing SHLD, so L का डेटा 2550 में चला जाएगा, H का डेटा 2551 में चला जाएगा. Likewise, this SHLD going to be reverse to the LHLD. 10th instruction, we have total of 15 instruction to look over here. 10th instruction, we have the content of the register, that's XXCHG. What it will do? Content of the H are exchanged with the D and content of the L is exchanged with the E. So हमारे पास ऐसी पेयर थी, like we are having a pair of like DE और उसके नीचे HL. Okay. So likewise in a register pair we have. So initially there is a A, then B, C. So by writing the exchange, what it will do, this D data going to be exchanged with the H. D और H का दोनों का register का data है एक दूसरे को exchange कर लेगा. Similarly, simultaneously E and L also getting exchanged by writing this XCHG code over here. Next we have SPHL. Okay. So it's an instruction loads the content of HL pair into the stack pointer. So SPHL मतलब के stack pointer अभी जहां पे point out कर रहा है, okay, whatever the location is there of the stack pointer, okay, instruction is going to be load the content of HL pair into the SP. Okay, मतलब कि अभी HL में जो भी data है, okay, that is that particular instruction that going to be load into the stack pointer. Okay, so this is going to be that is going to be done with the SPHL. हमारे पास stack pointer था, program counter था, so that reference location also we can use by using SPHL, PCHL and so on. Next we have XTHL. अगर कोई नई चीज समझ में आ रही क्या हो रहा है यहाँ पे, so don't worry, whenever we go with the instruction, whenever we go with the program, we will going to use this instruction and वहां पे हमको actually पता चलेगा, देखिए ये ऐसा हुआ, by using this SPHL data has been load over here, XTHL ये हुआ. So don't worry about that. The practical aspects also make your doubt clear. 12th instruction, which is a XTHL. XTHL we have like content of L register are exchanged
with the location pointed out by the content of SP. तो स्टैक पॉइंटर में अभी जो भी लोकेशन दिखा रहा है वो लोकेशन से वो लोकेशन पे जो डेटा है उसके साथ डेटा एक्सचेंज कर लेगा कौन तो के एल ओके मतलब कि एल का डेटा है वो स्टैक पॉइंटर पे चला जाएगा और वो स्टैक पॉइंटर का डेटा एल में आ जाएगा सो लाइकवाइज द एक्सचेंज गोइंग टू बी डन सिमिलरली विद द सेम इंस्ट्रक्शन whatever the data of H is going to be exchanged with the SP plus 1 तो स्टैक पॉइंटर का जो नेक्स्ट लोकेशन है वो लोकेशन पे जो भी डेटा है वो डेटा एक्सचेंज हो जाएगा किसके साथ H के साथ so by writing the single instruction SP and SP1 both location data of that both location get exchanged with the H and L okay next we have PCHL okay that's the we can say kind of the stuff like the content of register H and L are copied into the program counter. The content of H are placed as a higher order byte and content of L are processed as a lower order byte. PCHL का मतलब ये हुआ अगर आपका प्रोग्राम काउंटर अभी लेट्स टेक 2030 पे है आपका प्रोग्राम काउंटर अभी 2030 लोकेशन पे है आपको उसको डायरेक्टली जंप करके 3050 पे भेजना है ओके तो आप क्या करोगे पहले आप H और L में 3050 ऐसा डेटा लोड करोगे बाद में जो भी ओके जो भी वो डेटा है H और L में यू जस्ट नीड टू राइट PCHL वंस यू राइट अ PCHL मतलब कि वो HL का कंबाइन जो एक मेमोरी लोकेशन हुआ वो मेमोरी लोकेशन के ऊपर आपका प्रोग्राम काउंटर डायरेक्टली चला जाएगा कि अगर आपको आपका प्रोग्राम काउंटर को कहीं पे उठा के दूसरी जगह पे पूरा शिफ्ट करना है so this PCHL is going to be used for that but वो जो मेमोरी लोकेशन पे आप शिफ्ट करना चाहते हो वो आपको पहले HL में लोड करने पड़ेंगे so the content of register HL copied into the program counter PC okay so we can say जो भी HL का जो प्रोग्राम जो डेटा है it's copied to PC और प्रोग्राम काउंटर है इसलिए वो उस जगह पे पॉइंट आउट करना चालू कर देगा ठीक है push B and pop H like this so what is a push B the content of register pair are copied into the stack आपको ऐसा करना है कि अभी जो मेरे पास B का डेटा है उसको टेम्पररी खाली करके मुझे कहीं पे स्टोर करके टेम्पररी रखना है आप कैसा लॉकर में जमा करने के लिए जाते हो लाइकवाइज इफ यू वांट टू जस्ट store your content of this register B C D E H L like so when you write push B so B और C का डेटा है it's going to be stored in your stack pointer आपका जो स्टैक पॉइंटर होता है पहले उसमें B का डेटा चला जाएगा बाद में C का likewise that data is temporarily going to be stored over there on that particular location once you write pop instruction push मतलब आपने स्टोर किया pop मतलब आपने फिर से ले लिया so another reverse instruction of that one like pop H the content of stack pointer are copied back into the register pair आपने अगर ऐसा लिखा push B तो B और C का डेटा है वो चला जाएगा स्टैक पॉइंटर में उसके बाद आप लिख रहे हो pop B तो वो सेम डेटा है वो फिर से आ जाएगा कहां पे B और C में लेकिन आप ऐसा भी कभी कर सकते हो आपने push B किया तो B और C का डेटा चला गया स्टैक पॉइंटर में उसके बाद आप pop H कर रहे हो तो क्या होगा H और L में वो B और C का डेटा आ जाए सो लाइकवाइज whatever the push and pop instruction you are writing according to that higher order and lower bit either going to load or it's going to be get back from the stack pointer anybody having any doubt any question over here then please tell me if you have not understood anything then please write if you have got everything then please write that clear so I can get the better idea so I'm going to move further for the programs अगर आपको सब समझ में आ गया है so please write yes or clear so I will go with the other programs everybody please write your response quickly yes somebody has raised the hand yes ask the question open your mic Udit Raj Yes, sir. Sir, in the 10th one, sir. XCHG. just a second huh 10th one हाँ बोलिए Sir, do the register have a priority system or otherwise there is no need for such a command? I'm not getting can you repeat it again hello
Sir, do the registers have a priority system or there's no need of the command, sir? Why would I want to exchange the data of H and D? Okay, why we need to exchange the data? Yes, sir. Like if you have, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शायद उससे पता चले कि अगर आपके पास ऐसा है कि आपको जो आपके पास दो मेमोरी लोकेशन आपके पास अलग अलग चीजों पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आपको दो मेमोरी लोकेशन पे डेटा जो अभी यहाँ पे पड़े हुए हैं, आपको अगर वो दोनों को एक्सचेंज करना है, इफ यू वांट टू एक्सचेंज देम, ओके, तो आपको आप क्या करोगे, पहले एक मेमोरी लोकेशन पे ले उसका डेटा एक डी में लोड करोगे, बाद में उसको एक्यूमुलेटर में लेके जाने के बाद कहीं पे टेम्पररी स्टोर करोगे, बाद में जाके दूसरा मेमोरी लोकेशन लेके आओगे, उसका डेटा कहीं पे स्टोर करोगे, बाद में यू कैन डू दी एक्सचेंज। अगर आपको एक्सचेंज डायरेक्टली स्वैप ऐसे करने को मिल रहा है, आप सोचिए दो जगह पे दो इंस्ट्रक्शन है, दो डिफरेंट डेटा है, एक दूसरे को एक्सचेंज करने के लिए अगर कोई सिंगल कमांड नहीं है, तो आप सोचिए कि उसके पीछे कितना प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई हमारे पास इंस्ट्रक्शन है और नीड है कि दो डेटा को हमको डायरेक्टली एक इंस्ट्रक्शन में एक्सचेंज करना है, ओके, दो मेमोरी लोकेशन के डेटा को, अगर ऐसा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो आप सर सोचिए वो उसके तो पीछे समझे का कि बैकग्राउंड। हाँ, सर वो मैं समझ रहा हूँ कि if we need it then we can do with this. Why we are gonna need, sir? क्योंकि एक्सचेंज ये डेटा तो हमको एक्यूमुलेटर में चाहिए या तो 16 बीट रजिस्टर में चाहिए, सर मैं डी में क्यों इसको भेजूंगा इसका डेटा? डी का डी का डेटा एच में क्यों भेजूंगा? यस सर। ओके, एच कंटेंट ऑफ एच एक्सचेंज विद द कंटेंट। नहीं, आप देखिए ये इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप जो एच और एल में जो भी लाइक एच में 2030 है, आप सोचिए 2030 एच एच में और एल में है, डी और ई में 3050 है। तो ये क्या हुआ कि 2030 3050 इट्स गोइंग टू बी जस्ट स्वैप देयर पर्टिकुलर location without using any move or without using any mvi such type of instruction man। वो सर एच दैट का रजिस्टर का दैट आप अभी डेटा ऐसा सा सोच रहे हो कि 2030 का जो डेटा था वो अभी एज में पड़ा हुआ है। नो, यू आर मिस इंटरप्रेटिंग, आई थिंक यू आर नो सर आई एम नॉट टॉकिंग लाइक दैट। सो आई एम सेइंग कि मेरे पास इसमें जो भी 2030 का डेटा है वो मेरे को नहीं, एक्यूमुलेटर में चाहिए। 2030 itself the register data, sorry, that यस address data is there। यस सर। हाँ, अभी 2030 एचएल में है। ओके, लेट मी यहाँ पे मैं अगर ऐसा लिखता हूँ कि लेट्स टेक 2030 और नीचे यहाँ पे मेरे पास लेट्स टेक आई एम हैविंग अ 5040 जस्ट फॉर एग्जांपल। अगर मुझे ये दोनों मेमोरी लोकेशन एक्सचेंज करने लाइक 2030 नीचे लेके जाना है, 5040 ऊपर लेके जाना है, तो ये चीज करने के लिए डायरेक्टली एक्सचेंज इज गोइंग टू बी यूज टू जस्ट स्वैप देयर काइंड ऑफ द नंबर्स विथ ईच अदर। Sir, ये that I'm getting that I need to exchange the data. But why do I need to exchange the data? आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, आप सोचो कि अभी आप कोई बिटवीन आप बी और सी के साथ कोई भी प्रोसेस अभी आप कर रहे हो कि भाई राइट नाउ यू आर हैविंग वन मेमोरी लोकेशन दैट ऑलरेडी लोडेड इन एचएल। ओके, वो ऑलरेडी अभी एचएल में लोड है, आपने वहां से कुछ डेटा लेके एक्यूमुलेटर में भी प्रोसेस किया है। अभी आपको वो सेम डेटा है, लाइक यू नीड टू just send it to any other place। okay, so with some of the instruction like that, like जैसे मैंने यहाँ पे आप कहाँ पे मैं बता सकता हूँ, let me go with that stuff। HL, yes, ये XTHL और such type of the things we have। अगर आपके पास XTHL प्रोग्राम है, so XTHL प्रोग्राम is mostly going to be work with H and L pair only। okay, अभी HL H और L पेयर में जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी अभी वहां पे डेटा पड़ा हुआ है, उसी के साथ वो प्रोसेस करेगा। लेकिन अभी मुझे वो डेटा के साथ प्रोसेस नहीं करना है, किसके साथ करना है, जो अभी डी और ई में स्टोर करना है, किया हुआ है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर वो डी और ई में डेट अभी जो नंबर है वो मुझे एच और एल में लेके आने के लिए मुझे कितना प्रोसेस करना पड़ेगा कि भाई पहले इसको टेम्पररी कहीं पे स्टोर करो, बाद में डी का डेटा एच में लेके आओ, बाद में एल को कहीं पे टेम्पररी स्टोर करो, ई को वापस वो एल में लेके आओ, बाद में एक्स एच एल डी लाइकवाइज इंस्ट्रक्शन अप्लाई करो। उससे अच्छा है कि जैसे ही आपको ये इंस्ट्रक्शन एक्स टी एच एल चाहिए, ओके,
और वो अभी जो HL में है उसके साथ अप्लाई नहीं करना है, बट D वाले के साथ अप्लाई करना है. सो यू जस्ट नीड टू पुट दी इंस्ट्रक्शन एक्सचेंज. सो डायरेक्टली वो डेटा वहां से निकल के HL में आ जाएगा, एंड देन यू कैन डू दी रेस्ट ऑफ द प्रोसेस. आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर, गॉट इट। लाइकवाइज लाइक जो भी अभी HL में कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी होगी जो HL के साथ ही होगी, लेकिन वो HL लोकेशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई और लोकेशन चाहिए जो कि HL में पहले आए, बाद में भी प्रोसेस कर सकता हूं. तो टू गेटिंग डायरेक्टली फ्रॉम दैट वी आर यूजिंग एक्सचेंज. दैट्स व्हाई. ओके, सो वी कैन से द एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी यूज्ड इन दैट मैनर. कुछ कुछ चीजों के ऐसा होता है कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के लिए ये चीज करने के लिए 4 या 5 पूरे कोड लगाने से अच्छा है एक कोड में 3 मशीन साइकिल में खत्म हो जाए. Otherwise, you need to write another micro program, set of micro programs to do the same. Good question, and that I appreciate that you are understanding that why this instruction is required and all thing. Is that okay? Am I communicating clearly or not? Have you get my point or not? Yes sir. Okay, good one. Yes, any other question? Please, guys, ask me. Any other question? Any query? Last two, revise again. Okay, so push B and pop H. Okay, so push B we will go with again like content of register pair are copied into stack. So push B and we can say it's going to be work with the BC register pair. Okay, so what stack pointer decremented and the content of higher order register like B, D, H, F first are copied into stack. SP again going to be decremented once and then content of lower register going to be stored. मतलब क्या हुआ अगर मैं push B लिख रहा हूं, ठीक है, so push B लिख रहा हूं तो अभी जहां पे stack pointer होगा whenever that location is pointed out that stack pointer register, वो location एक decrement down होगा, it's going to be decremented down. और वहां पे जो B का कंटेंट है whatever the content of B, whatever the data, let's say 20-30 है, सो बी का डेटा 20 हुआ, सी का 30 हुआ, सो 20 वहां से निकल के स्टैक पॉइंटर -1 में चला जाएगा और सी निकल के कहां पे चला जाएगा, स्टैक पॉइंटर -2. So we can say temporary you are making that slot empty, or you can say temporary you are just making their empty and you are store them into some temporary location in your stack pointer. Okay, whenever you are writing pop patch, so whatever the stored you have done previously, that going to be retrieved back. You can say like that the content of top of the stack pointer copied into the register pair, then location pointed out by the stack pointer to the lower order register first and then the higher order register first. मतलब कि जो आपने pop patch लिखा है, आप पुश के बाद पॉप करते हो जहां पे अभी लोकेशन है विच इज ऑलरेडी अ स्टैक पॉइंटर -2 एज पर आवर प्रीवियस एग्जीक्यूटेड टास्क. सो वो जो सी वहां पे मेरे पास अगर बी और सी की पेयर है तो बी का डेटा है, सॉरी सी का डेटा है, वो पहले मुझे सी में मिल जाएगा, बाद में स्टैक पॉइंटर नाउ इंक्रीज बाय 1. Okay, so then stack pointer increased by 1 and again I am getting the data of B over there. So जब पुश करता हूं मतलब कि वो स्टैक पॉइंटर को पुश करता है, भाई तू एक डिक्रीमेंट हो जा, ये डेटा स्टोर कर, अगेन एक डिक्रीमेंट हो जा, स्टोर द अनदर डेटा. व्हाइल इन द पॉप first you give the data of the last C, then again you get increment and again you give me the kind of the data of the B. So likewise push and pop मतलब क्या पुश करके डेटा स्टोर करो, पॉप करके फिर से वापस ले लो. Likewise this instruction going to be there. Is that okay Arman Ali, or it's clear or not? जब हम प्रोग्राम करेंगे एक्चुअली तब जाके एक्चुअली ज्यादा पता चलेगा कोई पुश एंड पॉप क्यों किया. दिस इज एक्चुअल इंस्ट्रक्शन, सो लेटर वी विल गो विद द इंस्ट्रक्शन, सो इट वुड बी बेटर फॉर एवरीवन. ओके, चलिए सो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट प्रोग्राम. ओके, यह फर्स्ट प्रोग्राम आप सभी को करना है, मैं भी यहाँ पे करते जाऊंगा और आप सबको भी पता चलेगा. ओके, सो लेट मी जस्ट गो विद द GNU-C. So this C और ये जो लिखा है, okay, you can consider their memory location like that. Okay, C, so 4 times 0 and all the things, so 0 0 0 0 start is this one, as well as I need to start my load instruction over here. So let me just remove. So first program हम करते हैं, कौन सा फर्स्ट प्रोग्राम था हमारे पास कि हमको C में 41H को लोड करना है
और उसको एक्यूमुलेटर में कॉपी करना है। तो हमको पता है कि डायरेक्टली 41H हमको लोड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन मिलेगा, MVI data, because it's a 8-bit data. So by using MVI data we can do that. और वो डेटा को हमको सी में स्टोर करना है। सो व्हाट आई नीड टू राइट, MVI C 41H simply. Then the next one I need to copy that into the accumulator. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा कि सोर्स हमारा है C और डेस्टिनेशन है हमारा A. So what I need to write, move A to C, and then I need to write hold or I need to reset, such type of the things I can write. Okay, so let's type this program. MVI, type it with the caps lock, MVI 41H, and I need to do move A, C, RST. अगर RST 1 ये ले रहा है तो हम देखते हैं, अदरवाइज EXP2 prog 1. Okay, so RST is not taking. Let me just remove that RST, so if it is running or not. And you can take, like over here it is taking a hold. You check, there is a, oh, incomplete opcode. Oh, sorry, MVI C with 41, and I have just forgot that. So we take RST1. It is working fine or not? Let's check. Yeah, it's worked perfectly. So now what is the things we have? You have seen, like हमारा B में 41 आ गया. By writing A and C, your data is going to the accumulator also. और अभी हम यहाँ पे ये stack pointer की बात करते हैं, sorry, that's memory location की बात करते हैं. So 14, 65, 121, 207. Okay, so 14 यहाँ पे सब data है वो, that data is going to be in a, I can say data is going to be in a decimal. Okay, so now we will see what is equivalent to 14. It's a 20. If I can say there is a 65, 101. Sorry. Oh, sorry, I'm just decimal to hex. So 14, I am having a E. So let me see what are the stuff we have. Yes, 0EH hex code is there. Okay, हमको ये memory location पे ये hex code मिला, सही है. देखिए अभी 41H के लिए क्या होता है. Let me write a 41 hex. Oh, so directly with the 41 hex, के लिए, yes, it's a 65. So 65 can be represented as a 41 hex. अभी हम दूसरा डेसिमल नंबर यहां से लेते हैं 121. So 121 का hex क्या है, 79. So next we have 79, true. And then we have the reset one, so CFH. So what is a CFH? We will take a 207. Yes. So whatever the stuff that we are mentioning over here to do this instruction, this is a hex code actually we required over here. Okay, so this is a first program like MVIC 41H, move AC and reset. So ऐसे हमको hex code या फिर यहाँ पे हमको decimal, like we can say the decimal number you can write. Okay, that going to be pointed out in the different memory locations starting from 00 to 3. और हमारा accumulator में 41H मिलेगा, C में भी 41H मिलेगा. Is it true? Yes. So C में हमारा 41H है, accumulator में भी 41H है. तो सब लोग पहले जो अपना मोबाइल है, लैपटॉप है, कुछ भी है, so you just write the program. Yes, Udit Raj, ask the question, please. Sir, when I write this program, the program counter is not stopping. So have you okay, reset is Yes, sir, reset 1. Just a second. Program counter. Are you looking that from this memory or from any other place you are? No, sir, I'm looking on the phone, sir. It's showing Okay, that you are the looking on. program. Okay, Yes. wait. So those who are using phone, instead of reset, like reset we are using for hardware kit, you can use the hold, HLT. Use the hold, Udit Raj. So then it's going to be stop and proper output you can observe. Obviously, hold के लिए जो memory होगा, whatever that location is there, it's going to be changed. But somehow you can make it kind of the hold position to do the survey.
like whether the instruction is loaded clear or not. Is that okay, Udit Raj? Try with the hold and check whether it is working fine or not, it is stopping or not. Sir, it is writing execution terminated by the user. So what we can do, Udit Raj, just share your screen now, mobile screen, and now we will go with the one by one. अभी सबको पता चला है कि हमको क्या करना है. सी में आपको 41H लोड करना है और बाद में उसको एक्यूमुलेटर में कॉपी करना है. दिस इज अ सिंपल टू इंस्ट्रक्शन इज देयर. सो एवरीबॉडी स्टार्ट डूइंग दैट. ओके, एग्जीक्यूटेड टर्मिनेटेड बाय यूजर. ओके, होल्ड का अभी प्ले करो क्या होता है. uh, अभी हुआ ना. लाइक नाउ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8001. 800. You can start it with 000 also. It is not an issue we have. Now, is it showing the same stuff? 0E4179. Let me check with my answer. 0E4179. So instead of reset, it is going to be hold. And instead of CF, you are getting a stuff like 76. Yes, it is true. So सब लोगों को ये जो एग्जीक्यूशन वाला है, असेंबली स्टार्टेड और ये जब जो सब चीजें हैं, ये आपको वेरीफाई करनी है whether it is going to be same with me or not. So we can say it is going to be a done. So ये जो स्टेटस है आपका, उसमें A में डेटा है, C में डेटा है. This is actually your status is showing in your overall kind of the program execution. Now it is stopping. Okay, it's going to be hold in position. Okay, Udit Raj. So जो लोग मोबाइल से कर रहे हैं, kindly use a hold HLT instead of reset one. Okay, does anybody have completed this stuff? Simple 2-line program. Quickly, my friends. Is it completed or not? Done, everyone. Please write your response. Is it done in mobile or laptop? या किसी के पास अभी मोबाइल ही नहीं है, कुछ चीजें. So what we will do now, we are having that's up, like we have only a 6 to 7 minute, and now it's time for the summary. So आज हमने ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है, क्या मीनिंग होता है, ये सब चीजें हमने पढ़ी. नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स जो भी हमारे पेंडिंग 4 टास्क है वो पहले हम कंप्लीट करेंगे और सबका प्रोग्राम हम देखेंगे वेदर इट इज कमिंग राइट और रॉन्ग, कोई इश्यू आ रहा है मैं यहाँ पे प्रोग्राम करके बताऊंगा, आपको करना है और हम वेरीफाई करेंगे लाइक वेदर इट इज कमिंग राइट इन मोबाइल ऑल्सो, इन लैपटॉप ऑल्सो, लाइक दैट. Okay, so is it okay? If you have any question, any query now, you can ask me. You have a 5 to 6 minutes of time. Otherwise, please write the summary of this today's laboratory, then your enrollment number, and then after you can leave. Any question, any query? I'm open for the question query now. Please, guys. If you don't have question query, please write your enrollment number and name, and then after you can wait for the next lecture. तो अभी आप माइक्रो प्रोसेसर के ये एमपीआई के बहुत सारे प्रोग्राम है जो कि आप ट्राई कर सकते हो. ठीक है, यू कैन ट्राई इट एंड यू कैन डू इट. ओके, यस मिहिर बोलिए, मिहिर डोबरिया. मिहिर बोलिए. सर मैंने हैंड नहीं रेज किया. ओके, आपने हैंड रेज नहीं किया. उदित ने किया. उदित, हाँ उदित बोलिए. Sir, what would happen if I don't stop the execution of the program like RST1? What if I don't use that? If you are not stopping that particular program, so in the kind of the either loop or in a continuous manner, it will just start, we can say it's increase their memory location, and kind of either their same instruction going to be repeated in every time, or it is just going to loaded by default 000 and then all this stuff. Either वो loop में चला जाएगा or it's going to be load the rest of the memory location with either void or with the 00 like that. So if you are just don't write a hold in your instruction, don't write the hold in the instruction and see that how the memory location going to be updated. Okay, आप अपना स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे भी दिखा सकते हो. आप होल्ड मत लिखो और बाद में एग्जीक्यूट करना चालू करो. तो आपने भी अभी बोला था कि योर प्रोग्राम काउंटर इज नॉट स्टॉपिंग एंड इट्स गोइंग रनिंग. सो प्रोग्राम काउंटर के सामने कौन कौन सी चीजें वहां पे राइट होती दिख रही है, देखिए. यस, नाउ राइट एंड वी विल सी लोड एंड रन.
It's hold. Have you written hold? Just a full file. Can you close this completely and again you need to start the program? Better we can do that. New file करके फिर से करिए. Let me check in my mobile also, and let me just give you a 2 minute. Give me a 2 minutes. So I'm also going to check in my stuff. Continue. No, I don't want to continue. Just a second, huh? MVI 43H MVIC with 43H. Yeah, so it's in all stock pointer, it's NOP, 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 nothing is going to be coming. So it's increment and it's going to be go up to the last memory location like that. So such type of the stuff is going to be happening. Have you got my point? So program counter get increase and NOP is going to be stored in every location. Yes. Yes, so everybody please write your response in the chat box and then after you can leave. Okay, we are going to discuss this stuff in the next laboratory. Okay, you can also try this other program also as per your convenience. Okay, whenever you have free time, it's like a game. Thank you. Everybody quickly write your enrollment number and name and start the next lecture.